Hello everyone. Today will be the second episode जो podcast हमने पिछली बार शुरू किया था. Last time we discussed the book Same as Ever with KCS sir, and today we have Ketan sir also with us. And the book that we're discussing is this. It's called The Inner Game of Tennis. Now the Inner Game of Tennis एक किताब है जो कि teaches you some basics about self-management and not being overly critical, and I'll let Ketan sir take the lead over here because he's the one who sort of suggested this book for this discussion. So sir, what has been your experience with this book? Okay, thank you Abhijeet for having me. Now before I start with this book, I want to give a background on my own UPSC journey and how I discovered this book. So I started preparing for UPSC in 2012. 2013 was my first attempt. My first and second attempt I did not clear the exam. And right after the 2014 attempt का जो मेंस था, उसका जो result आया था, उसके बाद when you start the preparation, you start with an overconfidence और थोड़ा cockiness होता है that I have come from the IIT, I am at the top of the intelligence का जो hierarchy pyramid है उसमें, and I'll be able to clear in the first attempt. लेकिन फिर first attempt में नहीं हुआ. I gave the second attempt में नहीं हुआ. And after the second attempt, a lot of that overconfidence has vanished. थोड़ा सा doubts creep in होने लग गया था that is this exam meant for me or am I meant for this exam? So right after my failed attempt, my failed second mains, I picked up this book. And also I wanted to get away from whatever I've been studying for UPSC for the whole of the 2 years. और ये book पढ़ने के बाद ना I realized a lot of things that I've been doing wrong. So I want to quote the very first lines of this book, जो बिल्कुल introduction में है, right? It says that every game is composed of two parts, an outer game and an inner game. The outer game is played against an external opponent to overcome external obstacles and to reach an external goal, right? So right around जो हम UPSC कर रहे हैं, तो that is an outer game, right? I'm playing it with the fellow aspirants जो हमारे साथ compete कर रहे हैं to clear an examination. I want an external, right? An external result that I want. So that has been the game that everyone is playing, that I was also playing. But it also talks about the inner game. Now this is the game that takes place in the mind of the player, right? It is placed against obstacles as lapses in concentration, nervousness, self-doubt, self-condemnation. Now that is when I realized after reading this book that I'm not focusing on the inner game. ठीक है? A lot of things that has been taking place in my mind, उसको मैं focus नहीं कर रहा हूँ. I've been very self-judgmental. मैं खुद को judge कर रहा हूँ, and that is why I'm not reaching my potential, right? So in that way, this book was a very important part of my UPSC journey. I think personally अगर मैं भी बोलूँ तो even on this channel we've talked a lot about कि भाई mental health and कि भाई meditate करो, workout करो, all of this with the idea कि भाई the inner game is not just valid for UPSC, it's valid for life in general. कि भाई आप cook कर रहे हो या maybe you're approaching somebody you're interested in talking to, तो उधर भी एकदम से ऐसा होता है कि भाई मतलब बात करिए, अच्छा वो ना बोल देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे तू बेवकूफ़ है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया. एंड दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म sabotages you in the long run. क्यों? क्योंकि अगली बार तुम खाना बनाने ही नहीं जाओगे, क्योंकि घुसने से पहले तुमको लग रहा है कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुम नमक ज़्यादा डाल देते हो, तुम ये कर देते हो, वो कर देते हो. दिस इज बिकॉज आई हैव बीन लर्निंग टू कुक एंड दिस इज अ मोनोलॉग दैट आई समटाइम्स हैव इन माई ओन हेड. क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब यू आर वेरी कॉन्शियस that I want to do a good job, and because I want to do a good job, so then I'm self-critical, then I'm like just very very conscious, and because of that being conscious I'm not even enjoying the process, and खाना डंका भी नहीं बनता फिर. Yeah. And on the face of it, this book is not only about tennis, because otherwise people would think कि क्या बात चल रहा है, it's only about tennis, inner game of tennis. But yeah, क्योंकि you might understand things better if you have played any of the racket sports, because some of the examples mentioned here talk about how improvement happens while playing the game of tennis, right? मतलब racket sports के अलावा I think even if you played cricket also. Yeah, and again,
इंडिविजुअल स्पोर्ट या फिर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे एक एस्पेक्ट वो भी है कंपटीशन वाला एलिमेंट, जो कि फंडामेंटल है यूपीएससी में, राइट? तो यहाँ पे भी दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट व्हाई डू सम पीपल चूज टू प्ले अ सर्टेन गेम, व्हाई इज इट दैट सम पीपल आर इनटू सर्फिंग and on the other hand some people are into competitive, so called competitive sports. वहाँ पे भी एक individual attitude पता चलता है कि I don't want to outsmart or prove myself that I'm better than some other person. तो ये यूपीएससी वाले गेम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप सोचने लगोगे कि क्या मैं इस प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं इससे स्मार्टर हूँ, मेरे बगल वाले कॉम्पिटिटर से मैं स्मार्टर हूँ, देन दैट इज़ वेयर यू आर नॉट रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल. वहाँ से जब स्लोली आप शिफ्ट करते हो कि नहीं, मेरे को हर टाइम कंपैरिजन मोड में नहीं जाना है, आई एम यूजिंग द अदर पर्सन ओनली एज अ पर्सन टू कंटेस्ट, यानी मेरे इनर एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. आई एम सीइंग द अदर पर्सन नॉट जस्ट एज एन एनिमी बट एज अ पर्सन हु इज पुशिंग मी हायर, राइट? यू आर अगेन फोकसिंग ऑन योर इनर सेल्फ. तो एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट व्हाट the two main aspects that are being discussed here is self1 or self2. Yeah. So self1 and self2 is, as discussed in this book, self1 is your thinking self, right? And self2 is your doing self. Now, distinction kabhi kabar it can be very difficult to understand ki what exactly is this. Now, self1 is the self which has this conversation with yourself ki, you know, I'm an average student. How can I do this? You know, ki I've never scored well. How can I clear UPSC? That is self1. Self2, on the other hand, is the one that, you know, just absorbs, is silent, is doing things. Now, किताब में obviously टेनिस के एग्जाम्पल से बताया है कि भाई आप किसी को शॉट मारते हुए देख रहे हो तो you are absorbing a lot of things just by visually seeing. And this is something जो पहले हुआ था कि भाई 2021 और 22 के प्रीलिम्स के पेपर्स मैंने क्या किया था, I made a whole 4-part फॉर ईच पेपर सीरीज ऑन यूट्यूब. उसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं नहीं बता रहा क्या करना है कैसे करना है, आई एम गिविंग नो थ्योरी, नो ज्ञान, नो स्ट्रैटेजी. मैंने कहा मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तुम बैठ के बस देख लो. वाई? बिकॉज वाइल आई एम सॉल्विंग द पेपर आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस कि ओके यू नो दिस पॉइंट में ये वाला चीज़ सही है नहीं है, क्यों है, क्या है. आई एम नॉट गिविंग एनी थिंग. एंड दोज वीडियोज हैव नॉट हैड अ लॉट ऑफ व्यूज, बट whatever views they have had, the comments have always been ki sir, this is the thing that really helped me understand how to go about it. And that is what self2 is. Self2 learns by seeing the thing observing the thing, by observing. So sir, what is your take on self1 and self2 and how have they interfered or, you know, supplemented your life? Yeah, see, the interesting thing is while Ketan has used it during his preparation, Yeah. I think you and me have read it after. Much after, yeah. And I've read it only recently. Now, this will change the way I work as a mentor or a teacher. That's true. Because this book is not just for aspirants. It's also for teachers. This is also for teachers. This is also for mentors. Because कैसे mentor करते हैं, क्योंकि कुछ लोग over coach करते हैं. I have been guilty of that. I have been guilty of that. And this is what I've observed also across last many years, कि एक preconceived notions के साथ नहीं जाना है कि यही this is the best way of writing, this is the best way of having an introduction, this is the best way of having a conclusion. And I have learned myself across the many years by looking at how things have been changing, as in how things can be even written better. Because for example, take the case of essay. एक टाइम तक essay में बोला जाता था कि आपको सब हेडिंग्स नहीं लिखना चाहिए, फ्लो में लिखना चाहिए, राइट? बट वो वाला जो है that was broken by I think अनुदीप दुरीशेट्टी has started writing. तो you never know कि एक जो डॉगमा है उसको ब्रेक करने से you might come up with better answers also, you might express yourself better also. एक set pattern को break करने से, right? तो as a coach also we should know that world is changing, there are better ways of expressing certain things, the kind of questions that are also posed by UPSC are also changing with time. तो उसके लिए कैसे हमको adapt करना उस situation को. So that way this book gives a lot of things कि कैसे हमको ओवर कोच नहीं करना चाहिए, कैसे एक सेट पैटर्न को हम नहीं फॉलो करना चाहिए हमको. एंड इफ यू रिमेंबर नो, फॉर सम इयर्स आई थिंक 2013, 14, 15 में लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू राइट दोस डायग्राम्स. किसी को पता चला गया डायग्राम्स बनाओगे तो
ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो इट सो हैपेंड दैट बाय 2015-16 लॉट ऑफ एवरी आंसर में फोर्स फिट कर रहे थे. ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ बना दो. So much so that I think UPSC has come up with that instructions की देखो भाई इस बार से अगर ज़बरदस्ती हम ऐसे डायग्राम्स देखें तो पेनल्टी मार्क्स का जो कॉलम है वो दिखने लगेगा. नो इट इज़ मोर रैशनल. जब ज़रूरत है तभी यूज़ करो. ऐसा नहीं कि हर जगह फोर्स फिट करते हैं क्योंकि इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर सम पीपल. So as a coach also, as a mentor also, as a teacher also, this is something that I have learned possibly which will impact. So my Ketan So sir, it's very interesting that you talk about over coaching. I remember, do you remember this girl who had come to us for this UPSC interview Yes. mock? And she had done some 14-15 mock interviews. And very brilliant girl. I'm giving wonderful answers. And right around some point of time, she got nervous. Maybe she did not know the answer or she was not able to express herself. I think I know who you're talking about. Yeah, I think she was from Karnataka or Tamil Nadu, I don't remember. But उसके बाद फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया. उसके बाद ना इट वेंट वेरी डाउन हिल. And right around when we were giving her the feedback and we asked that how many mocks you have given, and she said she has given some 14-15 mocks. And that is where I understood the problem, that बहुत over coaching हो चुका है उसका, right? She has taken so much feedback and she is उसने problem भी identify कर लिया कि right around this point I am doing this. ठीक है, उसने identify कर लिया, but she is not able to work on that. ठीक है, उसको rectify नहीं कर पा रही है. And that is I think the self-1, which is the judgmental self. वो judge कर रहा है, उसको judge कर रहा है, and she is not able to overcome that, right? So in that way, overcoaching wala is a very crucial point. But one thing that I wanted to ask you particularly, that how did your preparation change? You said कि after your second attempt you somehow found this book, right? And third attempt when you got selected also. Right. What were the things that changed in your preparation? Once you had read the book and you had understood कि self1, self2 चीज़ें होती है, तो what did you change? So one of the things that really opened my mind was this distinction between the outer game and the inner game, right? That is where I understood that I have been playing the outer game. I'm competing with my fellow aspirants, right? I am trying to impress my parents. I'm trying to impress my friends. I'm trying to, copy the format in which several toppers have given their answers. I'm trying to clear this exam. And because of all these outer games that I've been playing, I've been letting my ego self, right? What the author says, that is self-1. I'm letting that to judgment, do a judgment call on myself that, okay, you are, this part you can do better, this part you have to work harder. And that is, really limiting my self-expression. The amount of potential that my inner self or my body or my self-2 has, that has not been expressed because of all these judgment calls I'm making. So right after I read this book, I decided that no, I'm not going to play these outer games. Okay. I'm going to play the inner game. I'm going to focus on improving myself. Right? The Ketan of yesterday, the Ketan of tomorrow is going to be a little improved version of the Ketan of yesterday, right? So that incremental improvement I started having in my preparation, right? And that was the, almost I can say a game-changing moment in my UPSC preparation. And because of that, my performances also in the exams improved a lot. Yeah. To add to what Ketan has mentioned now, when you focus too much on the outer game, you are focusing also on past and future. Past and future in the sense कि जैसे मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर होगा, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद इवन आई स्टार्टेड डाउटिंग कि मैंने क्या गलत किया डिसीजन, लीविंग एवरीथिंग पैरेलली देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई कुड हैव कंटिन्यूड वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. तो ऑल दोस थिंग्स कीप प्लेइंग. अब लोग क्या सोचने लगेंगे या फिर तो आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट आई स्लोली, नॉट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव नॉट रेड दिस बुक, बट
या कहीं और से मैंने सीखा होगा या फिर थ्रू ऑब्जर्विंग द थिंग्स की ज़्यादा ही अटैच्ड हो रहा हूँ मैं इस गोल की तरफ कि आई वॉज लुकिंग एट कि IAS बन जाऊँगा तो क्या होगा मेरे लाइफ डे टू डे में मैं ऐसा जैसे nowadays people watch those videos right lot of officers का तो when you start daydreaming about all those things you are not living in the now okay only when you are living in now only when you are living in present is when you are trusting your self to we are talking about self1 and self2 वो जो intuitive part जो होता है वो self2 में आप trust करना शुरू करते हो अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं सोचो फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में बट अगेन द ऑथर टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट द मोमेंट यू आर सीइंग दैट यू आर फोकस टू मच ऑन कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर पास्ट में मैंने क्या खोया है व्हाट इज एट स्टेक यू स्टार्ट focusing on let's say breathing what is there in present that's where even maybe meditation also helps for some people though I have not done it but then I think Abhijeet is a better person to tell that कि जो जब धीरे धीरे वो जो horizon आप कम करते रहोगे पास्ट से थोड़ा प्रेजेंट की तरफ आओगे सॉरी और फ्यूचर से भी प्रेजेंट की तरफ आओगे जितना आप ये horizon कम कर सको उतना आप प्रेजेंट में लीड कर सकते हो दैट इज गोइंग टू दैट इज वेयर समटाइम्स आई मतलब बुद्धा 2500 साल पहले आए उन्होंने बोला मध्य मार्ग एंड दैट हैज़ बीन द ट्रूएस्ट स्टेटमेंट सिंस देन लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू गो मध्य मार्ग फिट्स एंड यहाँ पे भी वही चीज़ है कि बी इन द प्रेजेंट डोंट गो इन टू द फ्यूचर डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट बी फोकस्ड हियर एंड नाउ एंड आई थिंक over the years a lot of things I've tried to do. I've tried journaling, I've tried meditation, I've tried just like zen बहुत चीज़ मैंने try की है because in the end वही है if you're right here now in this moment if you're aware of what's going on inside you you'll be fine but the more you get distanced from your own self the more you'll try to make some random botched up explanation for कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ जैसे बहुत बार this is something that I say so many times to all of our students कि भाई मतलब you should be very clear on why you're doing UPSC मैं कहा मेरे लिए नहीं है ये don't tell me tell it for yourself और वहाँ पे भी मैंने देखा है because I know it from my own personal experience that the reasons that I used to give me when I started preparation were bullshit ideas रैंडम कुछ भी बना के मैं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं जी बहुत बढ़िया चीज़ है ये ओवर टाइम ऑब्वियसली आई डेवलप्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओके मे बी वाई एम आई डूइंग दिस माई कोर रीजन्स वर सिंपली कि भाई कहीं ना कहीं देयर वाज दैट थिंग ऑफ दैट आई वांटेड टू प्लीज माई फादर क्योंकि भाई माई फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस तो उनका हमेशा से था कि भाई मेरा बेटा IAS बनेगा एंड अदर देन दैट आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट तो देर वॉज ऑल्सो दैट कहीं ना कहीं विच केतन मैंशनड कि भाई IIT कर लिया ये कर लिया वो कर लिया ये भी करेंगे फॉर मी दैट वॉज एक एडेड एंगल इसमें है कि मैं IIM भी कर लिया वो ड्रॉप आउट करके तो देन योर एंगल ऑल्सो कम्स इन कि भाई व्हाट द हेल एम आई डूइंग सब कुछ करके अब फिर यहाँ भी कर रहे हो तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट ड्रिवन बाय द फैक्ट कि आई हैड टू प्रूव समथिंग टू नोबडी एल्स बट देयर वॉज दैट एंगल IAS बनने के लिए शायद मैंने कभी पेपर नहीं दिया ये It was never in my head कि so a lot of looking at the past and lot of looking at the future. And you also mentioned a very important point, the role of social media, right? And because of social media and all these reels, grand entry, IAS reels or this and that, and that affects the mind a lot, right? That an impressionable mind sees that and starts thinking about his own, his or her own preparation, and starts, self-judging the preparation. That how am I going? Am I going in the right path? And that really, is an obstacle for your preparation because until unless you are self-confident and you are just looking at yourself and you're focusing on improving your own self without being affected by all these externalities, then only you will be able to, fully express yourself and be the best version of yourself. Bring out your potential to the maximum. Correct, right. Here I want to quote a line from the book which says that the mind judges the event, then groups the event, then identifies the combined event and finally judges itself, right? And that is when you make a judgment call on yourself that I'm bad, right? I'm an not average meant for student. it, right?
I'm an average student, correct. And then the self-judgment becomes self-fulfilling prophecies. Yeah. तो ये वाली चीज़ जो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाला, तो दिस तो आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स. मतलब दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट होल फेक इट टिल यू मेक इट वाला चीज़. कि कहीं ना कहीं मतलब बोला जाता है ना दैट ट्राई एंड थिंक लाइक दैट यूर अ ग्रेट स्टूडेंट. एंड दिस इज कि भाई मतलब दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई बोलने वाली बात है फेक इट टिल यू मेक इट. इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज विच दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट लेटर ऑन कि भाई ट्राई एंड थिंक or be as a pro player. The idea there is कि when we suddenly act in a role, तो we are free from a certain amount of self judgment. Why? Because मेरे दिमाग में बस यही है कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, एंड वो रोल के दौरान फिर मैं बोलूँगा कि भाई मैं यूपीएससी टॉपर होता तो मैं कैसे करता, कि मेरे टेस्ट में गंदे मार्क्स है तो what would I have done? राइट. आई वुड नॉट हैव बिन सेल्फ क्रिटिकल कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट तो बेकार है, ऐसे होता ही नहीं है, ये है वो है. आई वुड हैव बिन लाइक ओके, हाउ डू आई लर्न फ्रॉम दिस? So sometimes that role play is very, very essential for you to break out of the already existing character that we have built for ourselves. क्योंकि हम अपने आप से कैरेक्टर में तो बात करते ही हैं, राइट? कि भाई इन मेंटर कॉल्स आई एम अ मेंटर, राइट? एट होम आई एम अ सन, आई एम अ ग्रैंडसन. मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट रोल्स वी हैव, एंड वो रोल्स हमारे काफ़ी डिफाइन हो चुके हैं. जैसे वन थिंग दैट आई लाइक सेइंग टू माई सेल्फ इज कि आई डोंट लाइक कॉल्स. मुझे कॉल करना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो ओवर टाइम दैट ऑल्सो बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि अब अगली बार मैं कॉल करने से पहले मैं 4 मिनट लाइक बस फ़ोन को देख रहा हूँ कि मुझे फ़ोन करना है, मुझे फ़ोन करना है, मुझे फ़ोन, कोई बात नहीं कर लेते हैं. तो आई ऑल्सो ट्राइड टू ब्रेक दैट मोल्ड बाय सेइंग नहीं करना है, खट एकदम से कर दो, सोचो मत बहुत ज़्यादा उसके बारे में. बट अगेन सम थिंग्स टेक लॉन्गर टू ब्रेक, सम थिंग्स आर ईजियर ब्रोकन. वही टू गिव एन एग्जाम्पल एज टू हाउ self-fulfilling prophecy happens is that, let's say, because a lot of people are giving mocks now for prelims, later on they'll be writing mocks for mains also. अगर लगातार 1-2 टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, they start thinking that देखो शायद मैं जो डाउट कर रहा था कि मेरे से नहीं होगा वो सही है. This is what self-fulfilling prophecy is. Or someone, and it also matters who you surround yourself with. The other people are also saying कि तुमसे ना हो पाएगा, something like that. and you're seeing a proof. अरे सही बोला है, शायद वो भी यही भी कर रहा है, मेरे मार्क्स वही सजेस्ट कर रहे हैं पिछले 2 मॉक्स वाले. तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको अब शायद आप एनालाइज ठीक से नहीं कर रहे हो. टेस्ट लिखने के बाद कितना टाइम बैठ के आप एनालाइज करते हो, कितना टाइम बैठ के आप ऑब्जर्व करते हो. द ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट दैट ही टॉक्स अबाउट, राइट? एंड स्लोली दोज थिंग्स हाउ यू मेक इट इंट्यूटिव कि आप नेचुरली कुछ चीज़ें आप हैबिट में लाते हो कि कैसे मुझे एलिमिनेट करना होता है, 2 में स्टक किया तो दैट कम्स नेचुरली, राइट? फॉर एग्जांपल आई लर्नड ओनली थ्रू मॉक्स बाय एनालाइजिंग मॉक्स दैट कितने अटेम्प्ट करने होंगे मेरे को, कि बगल वाला 80 अटेम्प्ट कर रहा तो मेरे को भी 80 अटेम्प्ट करना नहीं है, राइट? दैट समथिंग दैट यू विल सी because by your own self. You probably you're getting less marks because you're attempting 40 right, 40 are getting wrong. तो उसको आपको 60:20 करना है. तो उसके लिए क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, राइट? आर यू मार्किंग दोज वेयर यू आर एबल टू एलिमिनेट ओनली 1 ऑप्शन. तो आर यू व्हेन यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, वहाँ पे भी आप किसको चूज कर रहे हो वो भी आपको ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा, राइट? तो यही है, हाउ कैन यू ब्रेक दिस वो नेगेटिव थिंग्स getting converted to reality. This is what this book also mentions about. So the very first thing that the author suggests is that you should let go of the self-judgment. ठीक है? Only when you let go of the self-judgment, then you are free to observe that what you are doing wrong, what you are doing right, and वो जो objective observation है ना, उसके बाद से तुम्हारा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा. ठीक है? सेल्फ जजमेंट पहले तुम कर लिए दैट आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम नॉट गुड, और CSAT वीक है मेरा, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो वो कर लिए. तो फिर सडनली यू आर नर्वस, सडनली यू आर टेंस्ड, थोड़ा एंग्जाइटी हो जाएगा अबाउट द फ्यूचर. तो वंस यू लेट गो ऑफ दैट, उसके बाद ही तुम्हारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. वंस यू स्टार्ट observing and becoming more comfortable in your own skin. I would like to quote one anecdote here, an interesting anecdote wherein there are 3 players. Okay, he talks about
three tennis players. After a game of tennis, all three of them are going on a highway. They're driving a car. तो आगे वो एक लड़की को देखते हैं who is nude. Now वहाँ पे तीन kind of people है. एक बंदा है जो नेगेटिव जजमेंट में बिलीव करता है. ही स्टार्ट्स जजिंग लुकिंग एट दैट न्यूड गर्ल सेइंग कि कैसा ज़माना आ गया. पहले मिनी स्कर्ट्स पहनते थे, उसके बाद सी थ्रू वाले ड्रेसेस पहनने. आजकल तो लोग तो नंगे घूम रहे हैं राइट दुनिया में. वन पर्सन इज मेकिंग दैट जजमेंट नेगेटिव. देयर इज़ अनदर पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर की अगर ये लड़की मेरे लाइफ में आती तो मैं क्या करता है इसके बाद. उसको पिकअप करके कहीं लेके जाता. वी कुड हैव हैड फन टुगेदर. तो द थर्ड पर्सन हु इज ड्राइविंग ही इज ओनली लुकिंग एट द नाउ. ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग. He observes. When he is observing, he is noticing that her eyes are kind of closed. तो वो now में present में है और observe कर रहा है. तभी उसको पता चल रहा है कि this girl is sleepwalking maybe. So he goes there, he stops the car, he observes that the eyes are closed. So this nude girl is actually sleepwalking. So it is my duty then to stop her, take her to some, let's say some place and then. तो तीनों का एटीट्यूड से पता चलता है कि कौन नाउ क्या बोलते हैं. द सिचुएशन इज द सेम फॉर ऑल थ्री बट द वे दैट पीपल लुक एट दैट सिचुएशन इज वेरी वेरी डिफरेंट राइट. फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत सिंपल सा प्रीलिम्स का एनालॉजी अगर हम ले तो लाइक प्रीलिम्स के पेपर में कभी कभार बैठ के अब जैसे 2023 में यू हैड दीज ऑप्शंस राइट. 1 only, 2 only, 3 only, 4 only. Now there were a lot of people who sat in that paper and was like, bloody hell, what kind of paper is this? And there were some people who sat in the paper is like, okay, this is going to be fun because everybody is in the same boat, right? So the second kind of people I can bet on कि भाई these people performed better in prelims. क्यों? क्योंकि वो self judgment, self critical वाला चीज़ इधर से निकल गया है. उन्होंने क्या देखा कि भाई अगर ये difficulty level बढ़ा है तो ये सबके लिए बढ़ा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है. एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ कि दुनिया चल रही है. वॉट इज़ हैपनिंग. You can either be like, I've failed 2 prelims and now this paper has come, UPSC is trying to fail me in particular. No, UPSC doesn't hate you. UPSC doesn't care about you. UPSC doesn't even know you. Right? उनको पता बस तुम्हारा नाम फॉर्म से, but like they don't really care about you. Once you get to further stages, maybe they care a little bit about you, but how you perceive an event is all on you. And that's where I think this book is a great way कि भाई आप अपना जब inner game खेलो. मेरे लिए difficult है तो भी शायद सबके लिए difficult होगा. But then again, to play that inner game, you have to have some amount of self-confidence also. Confidence का बात कर रहे हैं तो फिर वही है कि जो player खेलता है, if you see someone who has played very well and if you ask how could you do it, तो he will not be able to say. That is where his confidence is reflected. कि उनको self 2 काम कर रहा है, वो subconscious self काम कर रहा है, जो hardwired है वो काम कर रहा है राइट. तो that is where that is reflecting the self confidence that he has. He is confident of his self too. He is not trying to over instruct every time कि मुझे ये shot खेलना है वो shot खेलना है. इसलिए that is what the coach says here is that whenever I ask and if I get an answer immediately, I know that there's a lot of coaching. Probably that person is still to learn still to learn to trust self too. अगर आप पूछते हो और वो आंसर नहीं दे पाता है, impromptu सोचता है क्या क्यों मैं खेल पा रहा हूँ right, why I am able to do, that means his self too is, as in self 1 is trusting self 2. Many of the things have been hardwired and that is what also builds a lot of confidence in the individual. Okay, that a confident self is operating there. I think this is something similar in the sense of कि जैसे UPSC toppers का बहुत सारे interviews होते हैं, right? So a lot of them will give you very generic advice कि they'll talk about कि भाई same books हैं, revise करना है multiple times, पढ़ना है, क्यों है, क्या है. Now students sometimes they just follow that blindly and then they're like कि भाई इसने तो mislead कर दिया. तो that is where also somewhere the self 1 and self 2 वाला differentiation आ रहा है कि probably they don't even know all the things that they have done. Like for example, Gaurav Agarwal, I keep mentioning again and again because he's been one of the very few people who has been able to break down what self 2 has been doing to such a detailed level
that it makes it slightly easier for you to figure out, हाँ ठीक है कुछ ये चीज़ें करनी है, this if I can imbibe, it will be great. But most people are not aware of when the switch between self-1 and self-2 happens. Well, that's a great place to be, but somewhere or the other, मतलब personally I think मेरे से कभी हुआ नहीं था वो कि I was always a very self-1 heavy driver, क्योंकि बहुत ज़्यादा self critical रहता था, बोलता ये वो क्या क्यों कैसे. And I think part of the case जब वो हुआ हमारा, so for those of you that do not know, Ketan versus Union of India, Ketan. So once the case happened, I think I was so self-critical with myself, I was so negative with myself that it just like went down on a spiral. I was so miserable for an extended period of time that I realized कि यार ये नहीं करना है. हाँ मतलब then I realized ये नहीं करना है, ये पसंद नहीं आ रहा, जो भी है whatever है, मतलब हो गया अब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं. And I think that is where sort of I started trusting self-2 a lot more. कि भाई नहीं, that there is that automated self which knows how to do things. Let's trust it a little more. Before that I used to be like नहीं तो बेकार है, तूने ये नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया. So sometimes you have these moments in life which allow you to switch from one to the other. Like for Ketan that was कि भाई second attempt में mains नहीं हुआ, तो then मतलब थोड़ा वो doubt आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो he read the book, he was able to switch. For me मतलब it took me much longer, मतलब clear कर लिया, clear के बाद case हो लिया, ये हो गया वो हो गया, then I was able to switch. Yeah, you bring an important point कि सबके लिए the route to discover their self is different, because all aspirants are very different. And that is why you see that a lot of toppers जो बताते हैं ना that they have done this, a lot of aspirants are not able to replicate that. Yeah. Because they are trying too hard to copy them, right? कि ये this topper he writes answer like this, I'm also going to write exactly like this and expect the same result, right? But that is not going to happen because you are very different from that other person who has topped the exam. ठीक है, उसने अपना self discovery कर लिया, he has made all the discoveries, he has done his studies and he has cracked according to his own abilities. तुमको अपना discover करना है, right? And that is where the book says that you do not copy but you observe a lot of toppers. ये हिंदी में एक कहावत है ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, बिकॉज यूपीएससी में भी वही होता है कि यू हैव मेनी टॉपर्स सजेस्टिंग मेनी थिंग्स, कुछ चीज़ें तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट दिखेंगी आप, तो क्या फॉलो करना है, या फिर द काइंड ऑफ सोर्स मेटेरियल, किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, किसी ने बिपिन चंद्र पढ़ा होगा, क्या पता हो, कुछ लोगों ने लक्ष्मीकांत बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है. सो अगेन डिफरेंट थिंग्स कीप कमिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू अल्टीमेटली इज दैट see for yourself, observe for yourself, right. But obviously, and also observe the fact that there are some commonalities. मैंने say for example I keep saying that during mains का जब mentorship करते हैं, थोड़ा अगर वो काफ़ी confusion में individual, so I just suggest एक काम करो, तुम इतने पिछले 2-3 साल की ये टॉपर्स के हैं, ये एक बार आप डाउनलोड करके यू जस्ट ऑब्जर्व द वे दे आर राइटिंग. सो वंस ही ऑब्जर्व 4-5 डिफरेंट स्टाइल्स, उसको देखिए कुछ कॉमनलिटी तो है इन चारों में, दिख रहा है कि ये चीज़ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं. द वे दे आर राइटिंग मे बी डिफरेंट, बट हर कोई ना वो कोर पॉइंट्स नहीं मिस कर रहा है. एक बंदा शायद डायग्राम ज़्यादा बना पा रहा है, एक बंदा नहीं कर रहा है, बट देन okay, so there are some common things. Okay, the way the people are concluding the answer is more or less similar in the sense they know the importance of how one should conclude an answer, or to the point introduction कैसा होना चाहिए. ये जो commonalities है वो आपको observe करनी है, and you build your own writing style based on that. Correct. So number one is you let go of the self judgment, and then now once you have let go of the self judgment, you are free to observe that what exactly the people who have achieved great success in this field are doing. ठीक है, and through observing them you start developing your own style. So this is where I think a lot of break happens between theory and practice. That in order to develop your own style, you have to have a certain amount of trust. And वो trust build करना, I think a lot of aspirants have difficulty in that, क्योंकि अब किसी टॉपर ने बोल दिया, अथॉरिटी फिगर ने बोल दिया, तो it's easy. क्यों? क्योंकि they've done the thing that you want to do, and then you're like, okay, उसने बोल दिया 100 टेस्ट देना, मैं 100 टेस्ट देगा. बट क्या तुमको 100 टेस्ट देना चाहिए?
बट अगर सॉ टेस्ट नहीं देना एंड सडनली यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक दैट जजमेंट कॉल बाय योर सेल्फ, सो देन देर इज दैट एलिमेंट ऑफ टेकिंग अ रिस्क. एंड बहुत लोग आई फील रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं रखते, विच इज़ अगेन मतलब दैट इज़ आई थिंक अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर टाइम. बट एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपका बढ़ता है, आता है, बट दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बिकम्स ईजियर इफ़ यू आर इन द मोमेंट. कि इफ़ यू आर ऑब्जर्वेंट, इफ़ यू आर हेयर एंड नाउ, तो मे बी यू विल रियलाइज कि भैया जो बंदा वो सॉ टेस्ट दे रहा था, सत्यम गांधी इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस. आई हैव मेट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ सत्यम गांधी हु ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड, एंड ही वॉज लाइक कि मैं उसको देख के ऐसा हो जाता था कि भैया ये टेस्ट दे के रिवाइज कर रहा है, कब कर रहा है, बाकी करता क्या है ये इंसान. तो उसका फ्रेंड है, उसके साथ पढ़ रहा है, ही इज़ जस्ट कि भैया मतलब नहीं कर सकता मैं, बट एटलीस्ट ही हैड द गट्स टू टेक दैट कॉल, राइट, कि भाई मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता और मेरे लिए शायद क्या काम करेगा. ही डिड दैट. दिस इज़ वेयर ट्रस्टिंग दी सेल्फ टू वाला चीज़ कम्स इन, कि भाई एवरीबडी हैज़ देयर ओन लर्निंग प्रोसेस. You have to trust your ability to learn, you have to trust your ability to grow and change and become somebody more than who you are, which is something that Ketan touched in the beginning, that being 1% better than you were yesterday, constant continuous growth, being better than who you were, rather than मैं बोलूँ कि भाई मतलब मेरे को उससे better होना ये होना है. तो somewhere or the other this ability to trust yourself, that is a jump that a lot of people don't take. They want to be told कि भाई ये करना है, हो जाएगा. Which is why a lot of the times the comments that we get on YouTube or like even in class, in mentor calls, everywhere you get asked बस बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा सब कुछ. मैं कहा अगर मेरे बताने से हो रहा होता तो तुम पहले कर चुके होते, क्योंकि मैं तो सब बता चुका हूँ. और मैं क्या, मेरे से पहले 50 लोग और बता चुके हैं. आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू शेयर हाउ टू गेट दिस डन, राइट. तो देन समवेयर और द अदर दैट जंप यू हैव टू टेक. एंड I think, does the book say anything about taking that job? I think there's no specific thing over here, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चला जा रहा है कि आपको टेनिस खेलना है. नहीं. So you talk about trust. So before you trust, you have to realize that the human body, your body and your brain is capable of amazing things. That's true. ठीक है. Once you let go of judging कि मैं बुरा हूँ, मैं I'm bad, I'm average, I cannot do this. Once you let go of that, you will be surprised कि तुम कितना ज़्यादा कर सकते हो. A simple exercise, just तुम start thinking about all the names that you know. ठीक है. And you'll realize कि you would think कि मैं maybe I know 1,000 names, maybe I know 2,000 names. But once you do that exercise, you realize that you know much more than that, right? There is no end to the level of memory that you possess. ठीक है. तो once you trust yourself, you realize कि तुम्हारा potential बहुत ज़्यादा है. ठीक है. And once you have that, then a lot of confidence, a lot of self-confidence will come. ठीक है. So I think that's what the book talks about, कि एक बार तुम्हारा self confidence आ गया, once you become the player of the inner game, ठीक है, and then a lot of improvements will happen, and then you'll achieve a lot of things. Yeah, in fact, I think ये जो nervousness हो, being little underconfident, ये it happens with a lot of people who are starting the preparation, because या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट, यार इतने लोग हैं जो तीसरे बार दे रहे हैं, चौथे बार दे रहे हैं, सिक्स्थ अटेम्प्ट है, हाउ कैन आई कम्पीट विद द सिक्स्थ अटेम्प्ट गाय? करेक्ट. And mind you, after sixth attempt that person will not clear. In very first attempt we have seen toppers coming out. ये कैसा होता है, right? तो I think I can probably relate it with an example that the author gives. He talks about Jennifer Capriati. Okay. She started playing at the age of 13, and 14-15 के age में she was competing with the best of the best who have been like have won many grand slams altogether. So after the match, one of the person, एक media reporter, he was asking, आप सिर्फ 14 साल की हो, 15 साल की हो, यहाँ पे तो देखो सालों से खेल रहे हैं, कितना आपको नर्वसनेस नहीं लगा? तो उसने, मेरे को कोई नर्वसनेस नहीं लगा. But somehow that the person wanted to probe further
and get an answer as if yes, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा था. But she did not give in to that, and she was saying जो था वही कह रहे थे कि I actually looked at another way that चलो यार, it is my privilege, I should be very happy that I'm playing with such people. Right? तुमने choose किया इस game में आने का. Yeah. You have other options also to do. That's true. Right? And if there is no such level of competition, if you are a winner in this game, only then you are respected. Otherwise, अगर इतना competition नहीं है, you're not competing with those people who have already played the game for so many times, and after that you're succeeding. इसलिए तो आपको इतना respect मिलेगा या फिर satisfaction मिलेगा, right? So I can relate it with this kind of example that जो first timers हैं जो अभी start किए हैं preparation, first attempt दे रहे हैं या फिर second attempt दे रहे हैं, they're always having this thing back of the mind that यार ये तो 3 बार दे दिया, इसने 2 बार मेंस दे दी, इसने इंटरव्यू भी दे दिया है, हाउ विल आई बी एबल टू compete with them, right? So again इसी पे it all falls to that fact that the moment you start trusting yourself, right, वो सब चीज़ें धीरे धीरे fade away हो जाएंगी. You will look it from a different point of view instead of thinking them to be like a opponent, right? You will think as if that person is helping me to become better. Yes. Bro, a very good example in UPSC you see, जो भी start करते हैं ना, they think a lot about their handwriting speed. ठीक है कि भाई ये 3 घंटे का पेपर है, 20 क्वेश्चन मुझे लिखने हैं, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट. 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन लिख के मेरा टाइम ओवर हो जा रहा है. ठीक है, वो बहुत वो यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट इज इन द माइंड कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मेरा हाथ दुखने लगता है, इट स्टार्ट्स पेनिंग, ऑल दैट. ठीक है, वंस यू रियलाइज दैट योर बॉडी इज केपेबल ऑफ सो मच मोर, ठीक है, तो वो जो अगर सेल्फ जजमेंट हट गया और रियलाइज कि तुम उससे ज़्यादा लिख सकते हो, तो उसके बाद यू सी दैट हाउ एफर्टलेस इट बिकम्स टू राइट. अ लॉट ऑफ थिंग्स इज जस्ट इन द माइंड. वो अगर हटा दोगे तो बी एबल टू इम्प्रूव. या मतलब वेरी सिंपली पुट कि भाई हैंड राइटिंग जब आप कर रहे हो एंड मतलब यू नो वेरी कॉन्शियस कि मुझे तेज लिखना तो योर टेंस्ड अप, राइट, योर टेंस्ड अप, योर शोल्डर इज टाइट, योर एल्बो इज टाइट, योर रिस्ट इज टाइट, तो नेचुरली तुम खुद ही उसको इम्पीड कर रहे हो. बट लाइक व्हेन यू आर राइटिंग इन फ्री फ्लो, तो लाइक योर आर्म इज फ्री, योर बॉडी इज रिलैक्स्ड. एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट द ऑथर गिव्स हियर कि समटाइम्स व्हेन यू आर टू कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, तो वी टेंस अप, एकदम पूरा जोर लगा के लिख रहे हैं. हमें लग रहा है कि इतना जोर लगाएंगे तो फिर मतलब तेज आएगा, बट नो, दैट इज गोइंग टू इम्पीड यू फ्रॉम राइटिंग और डूइंग द थिंग दैट यू वांट टू डू. राइट, सो आई थिंक मूविंग ऑन, एक यहाँ पे अब चीज़ आती है कि हाउ डू यू चेंज, हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ यू नो मूव फ्रॉम वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डूइंग कि भाई लेट्स से आप एवरेज स्टूडेंट हो या ये मतलब टेंस हो गए लिख रहे हो, कैसे कर रहे हो, how do you change from there to the other side? For this, I think one of the sort of things that the author talks about is in the chapter called Discovering Technique. He talks about 2 different things. He calls one thing the technical instruction and the other thing the awareness instruction. So this aspect I really liked and appreciated क्योंकि this also connects with what KCS sir was saying कि बहुत बार क्या होता है, and this is coming from me, I have been very very guilty of over mentoring and over coaching students कि मैं टेक्निकल इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि भाई देखो आपको टेस्ट के बाद में ये चीज़ देखनी है, यहाँ करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये आई हैव गिवन सो मेनी इंस्ट्रक्शंस दैट नाउ आई फील दैट यू नो मैं सामने वाले को कंफ्यूज कर दिया वो बोल के इतना. ऑन द अदर हैंड, अवेयरनेस इंस्ट्रक्शन कैन बी समथिंग वेरी सिमिलर टू कि भाई जब आप टेस्ट दे रहे हो तो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ कंफर्टेबल आर यू, how confident are you in the first hour? I want you to pay attention to that. क्यों? क्योंकि अगर आप comfortable, confident हो, naturally आपका accuracy बढ़ेगा, right? It is not because of an instruction that I gave कि round 1 में करोगे तो round 1 में आपको ऐसा आएगा, round 2 में ऐसा आएगा. तो rather than the technical side of it, focusing more on awareness, because this also connects back to that base idea कि non-judgmental self-awareness जब आपकी होती है, that is the beginning of change, right? So what do you think about that, sir? कि change कैसे करे कोई इंसान, कोई aspirant who is stuck in some particular habits where they keep repeating the same mistakes? So what you're saying is that
वो सेल्फ अवेयरनेस, वो फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द ऑथर ऑल्सो यूजेस द वर्ड चाइल्ड लाइकनेस. जैसे in fact a similar thing, Self1 and Self2 is also there in Sociology, wherein G.H. Mead talks about an individual has a I and me, right? I is more spontaneous, me is the other way, right? So, the social self. तो something like that. तो आपको कैसे पता चलेगा कि Self1 is not having an overbearing effect on Self2? Is again going back to the observation. For example, let us try to take an example of how you are going to improve your answer writing by feeling good about the way you're writing answers. You're talking about how you're feeling, right? तो पहला चीज़ आप करोगे कि मान लीजिए कुछ ऑब्जर्व करोगे, कुछ टॉपर्स की कॉपी या फिर खुद का जो आपने पहले आंसर लिखा है उसके फीडबैक के बेसिस पे आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली gradually, let's say there's one aspect, you try to implement those things in the next test series. सारे aspects आप एक साथ नहीं कर सकते, हो सकता है कि everything cannot be brought into the next test. So let's say you observe the fact that maybe I'll have to focus on more on limiting the number of words that I write. Maybe I'm writing too much, or I have to focus on the aspect of not being able to address the question properly. उसका क्या है? तो आपको observe करोगे, कुछ papers में आप observe करोगे कि यार कैसे वो you will even observe the fact that some people even underline the keywords and all of those things, right? So this is a new learning for you. You have not been doing that. Maybe you're just reading the question and just starting to write the answer, okay? So you now identified that हाँ मैंने देखा है कि कुछ लोग underline करते हैं, कुछ लोग 2 बार पढ़ते हैं या फिर 3 बार पढ़ते हैं, number 1 number 2 करके लिखते भी है क्योंकि इसके 2 parts हैं. So this is what I'm going to implement now, okay? Now you have to practice that. You have to have a command over that. तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत पैन आउट करना होगा कि कितना टेस्ट मेरे को लिखना है. अगर इस एस्पेक्ट को मुझे इम्प्रूव करना है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप धीरे धीरे देखो कि कितना इम्प्रूव हो रहा है. जैसे इवन इन टेनिस ऑल्सो, इफ यू हैव टू इम्प्रूव योर बैक हैंड, राइट, देयर आर 5 थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव. यू हैव टू इम्प्रूव योर सर्व, you have to improve your backhand, you have to improve a little bit of forehand. You cannot do all the things at one go, right? So first focus on maybe backhand for the next 2 games. एक बार वो फीलिंग आपका अच्छा आने लगा, बैकहैंड खेलते खेलते उसके बाद you become you feeling better. It becomes part of your skill set. Then you move on to the next aspect and then you start building over that. Okay, so this is what you can do. I think इसको अगर UPSC कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो lot of people are in the zone कि मुझे 4 सब्जेक्ट एक बारी में करने हैं, right? Because I have to improve everything together all at once. I have also to write answers. I have also to do current affairs. I have also to do like so many things. And in that it is just very confusing because you're not able to pay attention to anything. तो आप खुद ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ को आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, इतनी देर में वो चीज़ बदल जाती है आपकी. क्योंकि जब दिन में 4 चीज़ कर रहे हो, 8 घंटा ही हैं, हर चीज़ को 2-2 घंटा करके ही कर रहे होगे. एंड उसमें फिर सडनली एवरी 2 hours देयर इज अ स्विच. तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग एंड देन सडनली इट हैज चेंज्ड एंड नाउ आई हैव टू वेट टिल टुमारो टू गेट दैट, So one example maybe because lot of people now are asking, sir मेरा full length test शुरू हो गया है और इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है. तो मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हो फुल लेंथ टेस्ट के लिए? मान लो देयर आर 6 फुल लेंथ टेस्ट लाइंड अप, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? आई डोंट हैव प्रॉपर प्लान, थोड़ा ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वो पढ़ लेता हूँ और देखता हूँ कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. तो उसको क्या कर सकते हो? वन थिंग दैट यू कैन डू इज फुल लेंथ है तो इस बारी में सिर्फ इकोनॉमी पढ़ के जाओ. डोंट वरी अबाउट हिस्ट्री एंड द अदर पोर्शंस. नेक्स्ट वाले में हिस्ट्री रिवाइज करके जाओ, उसके बाद बाकी एनवायरनमेंट पढ़ के जाओ. ऐसे करके जाओ जैसे लाइक टेक वन एक्सपेरिमेंट. हाँ वही, ट्राई समथिंग न्यू. एंड आई थिंक दिस इज वेयर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ दैट ट्रस्टिंग द सेल्फ वाला चीज़ आ जाती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ऑब्वियसली केसीएस सर कैन सजेस्ट समथिंग, आई कैन सजेस्ट समथिंग, केतन सर विल सजेस्ट समथिंग, बट अभी ये तुम्हारी तरफ से भी कभी ना कभी आएगा. और जब वो आएगा दैट इज़ वेयर आई थिंक द इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स हैपनिंग, बिकॉज दैट essentially means that you've started trusting yourself to take these judgment calls and you are observing, and somewhere or the other observation is at the core of everything. I think vipassana meditation में मैं किया था कोर्स, तो there also they're just like कि भी 10 दिन बैठा के तुमको बस ऑब्जर्व करवा रहे हैं
कि भाई तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको दिखेगा कि भाई अच्छा कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, रैंडम चीज़ हो रही है, एकदम से उठ के मतलब बैठे हो, आधे घंटे से बैठे हुए थे मेडिटेशन में, सडनली गुस्सा आ गया, क्यों आया, कैसे आया, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा. एंड सडनली द सेम थिंग हैपन्स इन टेस्ट्स. यू वर डूइंग फाइन, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, सडनली रैंडमली ब्रेक इन लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन है. एंड अभी क्या करें, उसके बाद 15 मिनट तुम इधर उधर हवा में किले बना रहे हो. सो केतन सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि भाई इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए? So, Kesar sir was rightly saying कि when you're picking up few of the subject, जैसे इस बार maybe सिर्फ economy में किया, ठीक है. Now once you have picked economy और उसमें improve आया, that is leading to a lot of improvement in your confidence, ठीक है. वहाँ से confidence आ गया, and now subsequently तुम other subject pick up करोगे तो तुम्हारा, क्योंकि you are now more confident, that becomes easier, ठीक है. तो एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ चुका है तो नाउ सब्सिक्वेंट स्टेप्स बिकम ईजियर लिटिल बाय लिटिल, एंड उसके बाद काफी इम्प्रूव किया जा सकता है. I think the author talks about here is relaxed concentration. Yeah. Right. And वही है, once you start trusting yourself, ठीक है, and once you have let go of the self judgment, उसके बाद you are much more relaxed. Which cases तुम एकदम relax हो गया, now you are able to concentrate more. चाइल्ड लाइकनेस जिस चीज को बोला गया था. Exactly. जो चाइल्ड लाइकनेस सर ने कहा कि वो चाइल्ड लाइकनेस आ गया है, now you are able to grasp much more. Also, study a lot more. आराम से you are not tensed, you are not anxious about anything. और उसके बाद काफी मतलब a great deal of improvement you will observe. So I think the next chapter as it moves on, it talks about learning how to focus, right? Changing habits में कि observation से आप आगे बढ़ो, observation के अलावा sort of don't be technical about things too much, be more aware, क्योंकि awareness आपकी रहेगी तो धीरे धीरे आपका improvement वहाँ पे भी आएगा. But I really liked the next chapter. Concentration and learning to focus, because sort of this was one of the sessions that we took in our new batch, essential का जो चल रहा है. तो वहाँ पे क्या बात हो रही थी, I took a session called learning how to learn, जो कि बहुत ही sort of हमारा हमने क्या बोलते हैं, पहले वे sessions हमने लिए हुए हैं कई सारे. I've also talked about this in a number of short videos, long videos, XYZ, but I figured कि this should be a concise, concentrated session that should happen at the beginning of the course itself. Right. Yes. Even this book has a similar quote. It says that once you have learned how to learn, then only you have to just identify what is worth learning. Yeah. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम धक्का मार रहे हैं बस, just like we're trying very hard, and trying hard पे इसके बाद like talks a lot about it. We're trying very hard, but like we are probably not even sure that this is the thing that we should be trying hard at. And वहाँ पे एक वो चीज आती है कि भी if you are relaxed, आपका observation चल रहा है ठीक ठाक से, आप awareness है, so then in time you will realize that there are some things that require that hard work and there are some things that you can probably just skip. But UPSC में problem ये होती है that a lot of people just want that shortcut right at the front. They're like कि भी मतलब बता दो मेरे को क्या छोड़ सकते हैं, आज ही बता दो, कल नहीं, मेरे को खुद से नहीं ढूंढना, तुम बता दो. They want the shortcut, and also the stakes are so high. Yeah. Right. In this you're spending years of your youth. Yes, you're spending, and that is why you're thinking a lot about the future and a lot about the past. ठीक है. उस कारण से you are finding it difficult to let go of many things. Finding it difficult to just be in the present. ठीक है. So somewhere or the other, I think this whole concept of learning how to focus, because this is something मतलब जो उस session में मैंने बोली, जो कि then I was just like, oh my god, I should have said this before, was the idea that आप कोई चीज कर रहे हो, मतलब that requires a certain amount of brain power. ऐसा नहीं है कि UPSC में मतलब आपको genius होना है, but ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब dumb हो और आप निकाल लोगे. थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए, right? And in this there comes that responsibility कि if I can do something to improve my memory,
if I can do something to improve my concentration, if I can do something to make my life easier in the long run, I should do it, right? There, the idea of learning how to focus, learning how to improve your memory, like being physically and mentally fit, because all of these things have a base effect. Ketan sir, what is your take on building this sort of concentration? Yeah. Do you play a game, or what was the way in which you sort of did this? So during my preparation, yes, I used to play a lot of chess. Right? Chess is it requires a lot of concentration. It does. Yes, but it was also very relaxing for me, right? Because I was focused at the time at that whatever position I was thinking about. तो वहाँ पे काफी a lot of focus that also taught me a lot of things. कि कैसे एकदम relaxed way में focus रहना है. Also that reflected on my studies, right? A thing author talks about is when you are playing the game, what you can do is observe your breath, right? कि कैसे, because you're breathing, even if you don't want, you're not thinking about, even when you're sleeping, you're breathing. So once you start focusing on your breath, then you can become more focused, you become more aware of the present, right? So मैं फिर past और future का नहीं सोच रहे हो, सिर्फ present का सोच रहे हो. So that is something that the viewers or aspirants can do in their time. I think यहाँ पे another thing that the author mentions is कि बहुत सारी चीजें होती है, you cannot put in words, right? कि this thing that you talked about and sir also talked about was कि I am focused and concentrated doing that thing that I love, right? But you know how you feel in that moment. I cannot put it into words. I cannot explain it because अगर आपने वो experience नहीं किया है तो फिर मैं बहुत सारी theory बता दूंगा, मैं बोल दूंगा कि देखो ऐसा लगता है एकदम zone में हो तो childlikeness क्या है क्यों है. These are all words. But so long as you've not experienced it, it's very difficult for somebody else to come and explain it. And अब दिक्कत क्या होती है कि there will be people who will come and explain it, and then that explanation will interfere with the thing that you're doing. Because now when you're doing that thing, you are suddenly thinking about कि अच्छा नहीं उन्होंने तो बोला था ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है वो होता है. नहीं, एक बारी कहीं पे भी अगर कैसे भी, maybe it's in the gym, maybe it's while playing TT, while it's a movie, or like while you're with your girlfriend, with your boyfriend, whatever it is, अगर आपको वो focused attention वाला zone कभी भी मिलता है, observe that too. Observe the feeling. Observe the feeling that it gives you, because that is what you want to replicate while you're studying. Because if you can do, you can guarantee कि हाँ मतलब sooner or later you'll have a good result in UPSC, because वो चीज नहीं replicate कर पाते लोग, and it's very difficult to explain that feeling also. Yes. The book also talks about the distinction between relaxed and trying to relax, right? Yes. Once you are thinking about relaxing, then you move away from the relaxed phase and you move into the phase of trying to relax. Trying to relax. So trying to relax, while you again have to move back to the relaxed phase. And that it is a feeling that cannot be. It can't be forced upon you, right? So this was, I think, this book also mentions Zen and the Art of Archery, right? D.T. Suzuki. So that book I read, I think that was the book that I sort of read during preparation, and उसमें एक point होता है where the teacher is talking about कि भाई this Western guy who's come to learn the art of Zen. Now Zen is a type of Buddhism that teaches you Zen meditation or the Zen mindset through an art. Sometimes it's archery, sometimes it's gardening, sometimes it's something. But just like this book is also very Zen. So उसमें एक आइडिया था कि एक पॉइंट पे स्टूडेंट फिगर्स आउट अ वे कि भी मतलब मैं ऐसे खींच के ना मैं ये ट्रिक करके कुछ मैं छोड़ दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ओ जी बाजी बढ़िया हो गया. बट वो वही वाला चीज आ गया, ही वाज ट्राइंग टू बी रिलैक्स्ड एंड इन दैट जोन, एंड द टीचर इवन दो ही इज सिटिंग फार अवे, ही इज एबल टू नोटिस कि भैया ना हो रहा तुमसे, तुम रहने दो. तो somewhere or the other, just trying too hard, being too aware, being too conscious, and trying to change that minor thing while you're in the zone is not going to help. You have to learn to trust yourself. You have to learn to be in the zone, and वहाँ से फिर कहीं ना कहीं let it flow. This is, I think, जो Mihaly something, it's a very difficult name.
because he hence I'm not even going to try. We'll ask the editor to put the name over here. So he has a great book called The Flow State. So the flow state is exactly this कि भाई मतलब आप उस zone में आ गए हो and just things are great, they're happening and you don't know why it is, how it is, क्यों है क्या है, but you can try and make it easier for yourself to get back in the zone, which is also, I think the book also talks about later on कि कहीं ना कहीं it is your job कि भी आपका जो consciousness है आप उसे focus तरीके से एक जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उस पे ध्यान दें, right? Because if you cannot focus your attention properly, so then like it is sort of like he gives the example of a searchlight कि भाई एक searchlight है, आपने एक searchlight को बहुत ही wide focus पे रखा हुआ है तो it is dispersed, you're able to see a lot of things, but आप searchlight को आप जैसे laser की तरह एकदम zone in कर देते हो, so then you can see a lot of detail of one thing, right? But now suddenly if your searchlight ka lens is dirty or if the LED is malfunctioning, so no matter where you are focusing it on, you will not be able to see a lot of things. So this is the point of where you have to sort of improve your concentration, the ability to be in that zone. क्योंकि अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या जो भी हो रहा है जिस कारण से आप जोन में ही नहीं जा पाओगे, so then talking about the zone, being in the zone, focused concentration, none of these things matter. So Yes. The book talks about coming into the zone of relaxed concentration. ठीक है? So you're concentrating, but at the same time you're also relaxed. So I think the book also talks later on about कि sooner or later there will be lapses in focus. कुछ भी आप कर लो कि you will not maintain that flow state indefinitely, and that is also something that aspirants have to come to terms with. You will have some good days, you will have some bad days, you will have some like good morning or a bad morning, doesn't matter. आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई I keep moving towards that flow state as much as I can. Yeah, you also talked about ये जो growth mindset वाला चीज होता है ना कि धीरे धीरे you improve yourself. Yeah. ठीक है? Because you're not preparation जब start कर रहे हो तो you cannot just go give exam and crack it. तुमको you have to become better at all the subjects. तो वहाँ पे धीरे धीरे once you start playing the inner game तो धीरे धीरे वो subjects पे command आने लगेगा and then finally you will appear for the exam and finally have a good result. Yep. So I think we're almost at the end of the book. Meaning of competition, also inner game off the court. Right. So inner game off the court is also where he talks about कि भाई आपको long term inner stability build करनी है. Right. कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ UPSC करूँगा, मैं UPSC के टाइम पे I'm focused, I'm like trying to improve myself, be better, and then जैसे UPSC हो गया तो अभी done है. Even after clearing, that inner game still continues. The game that you're playing has changed, but that inner game and outer game still exists, and this is sort of a lifelong process, which is sometimes very annoying. क्योंकि जब मैं I think छोटा था तो I used to think कि अगर कोई पिल मिलती है मैं खा लूँ और मेरा भूख मिट जाए दिन भर की, मैं खा लूँगा. Now a lot of people find that idea sacrilegious कि people ऐसा कैसे इंसान है, खाना छोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, खाने के लिए जीते हैं. Well, everybody has their own thing, which is where the idea of motivation comes in, right? But there are other areas of me where like sort of physically if I have to push myself कि नहीं मुझे faster दौड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे इतने push up करने हैं, so this is where I'll be much more motivated than somebody who might be motivated by food. Like Casey sir is motivated by movies, you're motivated by chess. So like everybody has their own thing, and over time you have to keep pushing and slightly improving because that is what I think life is all about in the end. With that, we'll end today's discussion, and I do hope that it was helpful. If it was, please do let us know in the comments, and if you have any book that you would like us to discuss going forward, तो वो भी आप mention कर सकते हो. And otherwise, in general, we'll pick some other book and we'll have a chat. तो वो तो कर ही लेंगे. So best of luck on your UPSC journey, and have a nice day.